আর আজ আমরা আরো একবার আইএলএস হসপিটালের এমন দুজন বা ডক্টরকে পেয়েছি যে দুজন ডক্টরকে নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব একটি দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে। হয়তো দুরারোগ্য এতদিন বলা হতো, কিন্তু আজকের দিনে ক্যান্সার এমন একটি রোগ যাকে সারিয়ে তোলা সহজ হয়ে গেছে আইএলএস হসপিটালের সৌজন্যে। এবং কিভাবে হয়েছে, কি করলে আপনারা এই ক্যান্সার থেকে মুক্ত পেতে পারেন এবং তার সঙ্গে কিভাবে ডাক্তারদের পরামর্শ মেনে আপনারা এগিয়ে যেতে পারেন, গোটা বিষয়টি নিয়েই আজ আমরা আলোচনা করব আমাদের স্টুডিওতে। আমার ঠিক ডান দিকে রয়েছেন ডক্টর কে শিবাশ্রী, কনসালটেন্ট মেডিকেল অঙ্কোলজি। ম্যাম, ওয়েলকাম টু নিউজ ভ্যানগার্ড। অ্যান্ড আমার সঙ্গে রয়েছে ডক্টর সঙ্গীতা টিকু, কনসালটেন্ট নিউক্লিয়ার মেডিসিন। ম্যাম, ওয়েলকাম টু নিউজ ভ্যানগার্ড। Thank you so much. So, ma'am, we'll start with Dr. Shivastri. So, I will start. I just want to know what is oncology. So, oncology is a broad terminology now, because mainly there are many things which come under oncology also. So, it's basically a branch of science wherein it is dealing with the treatment of cancer. So, that is oncology. Mainly the treatment and the diagnosis part and follow-up part of cancer patients is taken care under oncology. Okay. And I'll go to you also. Sure. What is the nuclear medicine? Nuclear medicine is a specialized branch of medicine in which, or oncology you can put it, in which we use radioactive isotopes. We inject it into the patient and we study the function of any organ of the body. For example, brain scan, bone scan, renal scan, thyroid scan. So it's a very specialized information what we give to the clinician. So, but can we say that this is a one book and there are just 2 chapters? Like when we discuss, we'll get to know that there are many chapters. Many chapters. One of the chapters is nuclear medicine. Okay. And oncology is something different? Big. Okay. Oncology is a broad terminology. Okay. Under which you will have one of the branch what you'll have is a nuclear medicine. So it's an umbrella. Oncology is an umbrella. And also, like nuclear medicine, it not only deals with oncology, it deals with non-oncology also. All right. So it has a broader sense. So, so I just want to know the branches that you mentioned just a little before. So what is the branches of oncology? So oncology, as I said, like mainly we are dealing with the treatment of cancer. So you have many things, like there are some cancers wherein if you are identifying early stage, you might just treat or get away only with surgery. And there are some cancers, if they are in advanced stage, the same thing, after surgery you might need chemotherapy or immunotherapy or any systemic form of therapy in the form of injections where you give to control the disease or to have a consolidation of the effects what you have got. And that is something which we put it as medical oncology. In oncology itself, if surgery is done mainly and surgically related issues are there, you put it as a surgical oncology. And wherein you give systemic therapy, in that you will have many other things coming up. But then that's a medical oncology wherein you are giving the systemic therapy in the form of injections or tablets, other medication form. And then you have another branch wherein you say radiation oncology. There are certain tumors wherein you can cure just by the radiation. And even if not for cure, sometimes you might have to palliate the symptoms, then also you need radiation. So there's another branch which is radiation oncology. Likewise, you have a nuclear medicine is one component of it, wherein you will treat certain diseases following certain surgeries. Then you might need your diagnostic part also, and also treatment part wherein you will give a iodine therapy like that in thyroid cancer. So that's another branch wherein you will be using it mostly for the diagnostic purposes also and also for treatment purposes. All right. So, cancer in the ward actually makes people fear, right? So we all know that. So you just mentioned about the treatment. So I just want to know the treatment modalities that actually comes under this. So as like the branches what I've told you is mainly based on the treatments what we give. So like जैसे मैंने बोला है कि if we are doing only surgery, if you are saying a breast cancer, if you are identifying it when it is very small, and depending there are many other tests also required, so you might get away only with surgery. Like with surgery, if you remove the tumor, then that itself is a cure. That's enough. If you are finding it at a later, like a little advanced stage, then you might have to give chemotherapy and radiation also. So your chemotherapy is your injections or the tablets form of drugs which is given to cure the disease and to maintain
the benefits of that. So there are certain tablets wherein you give after the complete treatment, you have finished your medicines, your surgery is done, then your injections, chemotherapy is done, then you finish your radiation. In spite of that, if it's a hormone positive breast cancer, you might have to give a tablets when it's a hormone driven for a certain time for 5 years or 10 years. So there are many components within that. So that is your medical oncology, where you give tablets or injections. And radiation, that is, we will give a radiation therapy to the patient, either as a part of comprehensive treatment wherein both surgery is done, chemotherapy is given and also radiation is given, or sometimes only radiation alone can be a cure. So that is one form of therapy where you give radiation. And likewise, like in certain diseases, so it is never one type of treatment you have in cancer, because cancer is such a disease wherein you have to target it from all sides, like depending on the burden of the disease. So you will need surgery also, you will need injectables in the form of medical therapy also, you will need radiation also, you will need hormonal therapy in the form of tablets also. And in certain diseases like thyroid cancers and all, wherein we have to take a help of nuclear medicine, so there we have to give a iodine therapy also. So it's all interrelated. Absolutely. So when can we include this in nuclear medicine part in this? So basically, nuclear medicine, we do PET scans, positron emission tomography, wherein we inject isotope which release positrons, and these positrons are captured by a PET scanner. It's like a camera, and it generates 3D hybrid pictures of PET and CT, the regular CT you know. So PET CT from the whole body is imaged, and it gives you a total comprehensive information to the oncologist where all the cancer has spread. Uska diagnosis ke liye, we first of all diagnosis is by the PET scan, then from which area to take the biopsy. It's a PET CT guided biopsy. Also, it is useful in response to therapy, response to treatment, whatever Dr. Shivashri is giving. Then we'll do a PET scan, baseline PET before the chemo starts for a patient. Then after 2 cycles of chemo, if the patient is responding, then she will continue with lesser number of cycles. But if the patient is a non-responder, then she'll have to change the line of regimen. So it's very important in the management of patients and for planning of radiotherapy as well. So this is how we get involved with this oncology. Okay, तो ये पेट स्कैन के बारे में आप जो बोल रहे थे, तो is it just because to understand जो जर्म है वो कहाँ पे एक्चुअली फैला हुआ है, किस लिए होता है ये पेट स्कैन? पेट स्कैन हमें स्टेजिंग, उस डिजीज जो कैंसर जो भी है, जैसे कैंसर लंग है तो वो हमें डिजीज का बताता है कहाँ कहाँ फैला है, और इफ इट इज अ एडवांस स्टेज देन दे हैव टू गिव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू दैट person. So management of the patients, cancer patients, is done based on the PET scan findings. All right. So and what are the indications? Indications for PET scan are oncologic and non-oncologic. Oncologic means cancer. तो सारे जो cancers हैं, breast, lungs, prostate, kidney, in all cancers, brain tumors, we do the PET scans. Okay. And non-oncologic would be in neurological conditions, जैसे brain में है, डिमेंशियाज आपने सुना होगा, अल्जाइमर्स डिजीज, तो इस तरह का जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें ये बहुत काम आता है. एंड कार्डियोलॉजी मींस वी सी द वायबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल. हार्ट अटैक के बाद कितना मसल बचा है उस पेशेंट में, क्या उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत तो नहीं है. सो ऑल दीज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द पेट स्कैन. ओके, तो हम लोग जो आप जो बोल रहे हैं कि सीटी स्कैन में जो होता है कि नॉर्मल सीटी में वो पेट हो, कहीं पे ब्रेन हो, उसमें भी सीटी स्कैन होता है. एंड व्हेन वी गो फॉर दिस पेट स्कैन, तो वहां पे हम लोग जान पाते हैं एक्चुअली वो जान कहाँ पे फैला हुआ है, और बेस्ड ऑन दैट यू जस्ट गिव द एक्चुअल ट्रीटमेंट. व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इज पेट गिव्स यू अ फंक्शनल इंफॉर्मेशन और अ मेटाबॉलिक मैपिंग ऑफ द बॉडी, वेयर एज सीटी ओनली गिव्स यू द स्ट्रक्चर. ये हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे इस्तेमाल कर रहे सेल्स वो बताता है. जैसे हम ग्लूकोज एफडीजी इंजेक्ट करते हैं, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड मेकिंग यू गिव यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन, फंक्शन एंड एज वेल एज स्ट्रक्चर. Okay, and what are the contraindications of PET? Contraindications of PET would be a relative contraindication, I would say. It would be the first 2 trimesters of pregnancy. पहले 6 महीने में PET नहीं करना चाहिए. Last trimester, if it is very much required, because organs of the baby have already developed. In certain cases, if it's very much required, the PET scan in the first trimester, then the lady will have to go for an MTP.
because the radiation exposure is pretty high. कितने जल्दी फैल जाता है ये, मतलब जो कौन सा स्टेज, जो हम लोग को सिर्फ नॉर्मली पता होता है कि स्टेज होता है, हाँ. बट वो स्टेज को कैसे हैंडल किया जाता है? अगर आप That Dr. Shivashri. So that is different for different tumors. We cannot say कौन से स्टेज में है ये तो हम बता पाएंगे, लेकिन ये सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में बदलने में कितना टाइम लगेगा ये कोई भी नहीं बता पाएंगे, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर ट्यूमर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द बायोलॉजी ऑफ द ट्यूमर. एंड कैंसर जो है वो हर व्यक्ति में एक ही तरह नहीं काम करती है, इट इज डिफरेंट. अगर हम एक ही बीमारी, मतलब अगर बोलते हैं कि स्टमक कैंसर है तो 10 लोग हैं तो 10 लोगों का एक ही टाइप का रेस्पॉन्स भी नहीं आएगा, और उनका जो लाइफ स्पैन जो भी है वो हर किसी में डिफरेंट है. ऐसा नहीं कि अगर मलेरिया है तो मलेरिया को आप सेम ट्रीटमेंट जो भी देंगे, आप आर्टिसोनेट देंगे तो हमें पता है कि ये तो काम कर ही जाएगा. किसी को 2 दिन में कम हो सकता है, किसी को 3 दिन में होगा, लेकिन होगा. लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा नहीं है कि आप एक दवाई देंगे तो हर किसी में काम करेगा ही करेगा, ऐसा गारंटी नहीं दे सकते हैं. दैट बिकॉज द बायोलॉजी, कौन सा जीन्स तो ट्यूमर को ड्राइव कर रही है. सो व्हाट इज इट दैट बेसिकली ड्राइविंग द ट्यूमर टू प्रोग्रेस, इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. So the question what you are asked is difficult to answer because we cannot generalize it to everyone. Okay. So so if someone has the cancer, so what would be their first approach to the doctors? Yeah. So if I have to say, first of all, someone has a cancer, they need awareness that whether it could be a cancer. अगर हमें कैंसर है क्या तो उसका लक्षण क्या हो सकते हैं, और हमें रिस्क फैक्टर्स कुछ है कि नहीं. बेसिकली अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे कि कुछ एडिक्शंस है, हमारा लाइफस्टाइल, ये सभी उसके, बिकॉज दो पीपल एज यू सेड राइटली, कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाएंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि 75 to 80% ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल. दे अकर बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड व्हाट वी डू. सो इफ दोज थिंग्स कैन बी हैंडल्ड वेल, you can prevent itself. We need not go for treatment, we can prevent cancers in first place. So that matters a lot. So before starting this show, what we are discussing off the camera, that is advances in diagnostic modalities and medical oncology. So is it the part of means? Yeah, it's a part of oncology, but as you were asking me, like how should the patient take an approach? So first of all, patient, everyone, I don't say patient, as a general, any human, we should know like what could be, what is, it's not something to be afraid of, something to be not known of. Like I do see that people here are even so scared about the word cancer that they don't even want to discuss. Correct. I have had patients, like if someone in the next family, neighbor, someone is having cancer, I have seen that patients are coming and tell me, madam, I'm now very much depressed because they are saying that I've done something sin. That's why I got the disease. That is what the awareness is. But that is something which has to change. Because ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक लोग से दूसरे लोगों को फैलेगा, ऐसा नहीं है. नहीं फैलेगा. साथ में बैठ सकते हैं, साथ में खा सकते हैं, सब कुछ नॉर्मली कर सकते हैं. लेकिन that is awareness. Like why it happens, जो हमारे लाइफस्टाइल से है तो वो देखना जरूरी है. क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो हर ऑर्गन का अलग होता है. अगर किसी का स्मोकिंग है हैबिट, तो डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर दैट स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कैंसर्स इन द बॉडी. तो उनका यहाँ पर त्रिपुरा में मैंने देखा कि हेड एंड नेक कैंसर्स और लंग कैंसर्स ये बहुत ज्यादा है. सो अगर किसी का ये स्मोकिंग का हैबिट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि either you quit it, if it is difficult at least you have to be on follow up, रेगुलर चेकअप. डी एडिक्शन वो तो अलग से टॉपिक है. लेकिन जैसे अगर आपको ऐसा है, ये रिस्क फैक्टर है, तो यू शुड नो दैट एनी अल्सर्स, अगर मुंह में कुछ छाले हैं लेकिन वो ठीक से इम्प्रूव नहीं हो रहा, 3 हफ्ते से ज्यादा अगर मुंह में कोई छाला इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू जस्ट गेट अ ENT ओपिनियन डन. लाइकवाइज अगर कोई कॉफ है, मतलब खांसी है, वो भी अनएक्सप्लेन, अगर कुछ आपको सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं है, खांसी है सिर्फ, लेकिन वो भी 1 महीने से ज्यादा अगर कम नहीं हो रहा है, ऐसा ही परसिस्ट हो रहा है, अगर आपका कुछ एडिक्शन ऐसा है स्मोकिंग का, देन यू डेफिनेटली हैव टू सी अ डॉक्टर. सो दीज आर अर्ली सटल सिम्टम्स विच वे आर नॉन स्पेसिफिक. मतलब कॉफ कैन बी देयर इन मेनी थिंग्स. सो ऐसा पिन पॉइंट करके ये सिम्टम है तो आपको जाना ही चाहिए, या आपको कैंसर डेफिनेटली होगा, ऐसे नहीं होगा. So that is another topic for discussion, to have awareness about the cancers, what could be the symptoms as per each organ.
अगर गले का कैंसर है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, पेट का है तो क्या क्या हो सकता है, वी कैन हैव अ एंटायर डिस्कशन. सो एटलीस्ट सिम्टम्स है, कोई भी अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम है तो आपको डॉक्टर को देखना चाहिए. और डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, क्या आपका कुछ एडिक्शंस है या कुछ फैमिली हिस्ट्री है, ये सभी लेने के बाद उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या टेस्ट करवाना है. सो मैम, जैसे आपने बताया अभी, जिसका बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बट बहुत लोग नहीं करते भी है. हाँ. सो जो लोग नहीं करते हैं, उनको कभी भी कभी उनको भी हो जाता है कैंसर. हाँ. वेरी ट्रू. तो ये सिम्टम्स क्या रहता है एक्चुअली? ये जो जैसे मैंने बोला 75 to 80% ऑफ द टाइम्स इट इज अ मॉडिफाइबल कॉज. सो जस्ट मेजॉरिटी आपका स्मोकिंग, बीटल नट च्यूइंग, बिकॉज दैट्स मच प्रिवेलेंट हियर. Betel nut chewing, smoking and alcohol, these are the top 3 most reasons. And apart from that, when we say, we have to say that food habits is important. There are too much of dry fish consumption here, too much of spicy food. So that can cause cancer. Yeah, and that's why I see a lot of GI cancers, that is gastrointestinal cancers are more common here, because they take and gallbladder cancers. Every other patient we see some or the other issue. Gallbladder surgery तो हुआ ही हुआ होता है. उसके अलावा वो, if they have not followed up, that might have been the what they have thought is only a gallstone, might be a tumor also. So that food habits, I don't, that's what I said here, the dry fish is consumed more. That is one thing, it's not good. Okay, because you never know like how this dry fish, even they say no we do it at home and then we preserve, but it's different. The process which is happening by the time it's dried, the kind of dust what is there, and when what you get in market, sometimes there's a study done in Bangladesh, a nearby place. So with this dried fish they have seen more of cancers, not only proven, but they have seen that organochlorous compounds like DDT and all more found in this dry fish. So there are many things actually behind that. And spicy food, too much of spicy foods, and these days the western kind of culture what people are getting into, all the preservative added food and all these things. And that too here I find that the food timings are very odd. Your breakfast is at 10 and dinner, the thought of dinner is only after 10. So it looks so simple, but it matters a lot. Even for the children, I see that they give their food at only at 9:30, like that, 9:30 only, even the small child is fed. Yes. So, and that too there's odd timings, and there's no, it's not followed every day. It's like one day one timing, the other day other timing. So here you mean the timing also? So that I mean it doesn't cause cancer as such. Okay. But I have seen that if I am seeing 10 patients, out of 10 patients 9 patients are on pantoprazole pan tablet, yeah, acidity ka tablet. Right. ये तो it's a common, like a chocolate for a small guy. Here all the people take acidity tablet है, खा लो, 10 साल से खा रहे हैं बिना कोई reason के. So you will miss out many things. Yeah. So you will think it's only an acidic problem unless it's gone on to stage 4. अगर आप वो सिम्टम को पहले ही जान लेते हैं तो वो H. pylori के इन्फेक्शन की वजह से होता है. अगर वो इन्फेक्शन को आप ट्रीट करते हैं, वो जो अल्सर डिजीज होता है वो आप वहीं पर कंट्रोल कर लेंगे. बिना चेक किए आप सिर्फ वो टैबलेट खाते रहेंगे, वो जो H. pylori इन्फेक्शन की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होकर वो गैस्ट्रिक अल्सर बनकर अल्सर के बाद स्टमक कैंसर बन जाएगा. मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको मैं देखता हूँ कि हर रोज वो नींद से जागे, सुबह उठ के एक बार तो दवाई खा लिया, गैस की टैबलेट खा लिया, तो देसे कि कुछ नहीं होता है, ये अच्छे होता है सेहत के लिए. सो आई ऑलवेज से कि टैबलेट कैसे अच्छा हो सकता है, मतलब विदाउट एनी कॉज. Very true. So that's commonly I've seen that. I was surprised initially when I came here to see that no prescription but taken for 10 years. Yes. Over the counter. Yeah. So लोग डरते हैं कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो लोग वो टेस्ट दे देंगे, काफी सारे टेस्ट होगा, फिर मेडिसिन, so that can affect my body a lot. So that is the point. Okay मैम. So मैं और एक क्वेश्चन में आना चाहूंगा. थोड़ी देर पहले हम लोग पेट स्कैन के बारे में बात कर रहे थे. So what are the preparations for this PET scan? Yeah. So for a PET scan, basically the patient has to be fasting for 4 to 6 hours only. Water is allowed throughout. And no vigorous exercise the day prior to the study, because we don't want muscle uptake. उसे muscle uptake आ जाता है. Then diabetics have to have their sugar levels controlled, which is very important. क्योंकि PET scan में हम radioactive glucose inject करते हैं. तो it's very important कि उनका sugar levels control रहे.
and we basically inject intravenously about 10 millicuries of the FDG. There's a waiting time of 1 hour for the biodistribution of the radioactive glucose. They are kept in a separate isolated room, quiet rooms they are called, and then scanning takes hardly 15 to 20 minutes in our latest modern machines, and the patient is good to go within 2 to 3 hours, and not a radiation hazard to anybody except for very small babies or a pregnant lady. For 24 hours they should not come near. So do they feel any pain? No pain, it's totally painless, no allergies, nothing. And these services are available in ILS hospital? In ILS we Agartala? recently started, and now patients don't have to go outside to get the PET scan Great. done. Great. तो मैं और एक चीज जानना चाहूंगा थोड़ी देर पहले so you guys mentioned that 75 to 80% cancer patients can be cured. I didn't say that. I said it's preventable or Preventable. modifiable causes. All right, preventable. So how they can prevent actually? So it's just Okay. based on the food habits that you mentioned, or the regular lifestyle? Yeah, all together. Because Altogether. it's the causes, when we say the causative or the risk factors for cancers, initially 75 to 80% of modifiable causes, wherein your main top list is your smoking, alcohol, drugs, all these things will come. Then your food habits, which play an important role, which with all the western food, all these things, that can be avoided because there are a lot of preservatives. Like having once in a month is fine, but not on a regular basis. And then obesity. Obesity is one of the major causes. If I have to put it down, I have to put it just after your smoking, alcohol, I will put next as a obesity. This is not a major problem here, but in metropolitan cities like wherein we see in the western world, obesity is one common, it's becoming common now. So that is mainly associated with breast cancers, endometrial cancers, colon cancers. They are very much related because of the obesity. Because the metabolism and all these things are altered. So that is one thing. So obesity, definitely we can have a control, like you do proper exercise, maintain your body mass index, so that your risk for breast cancers, colon cancers, that can come down. So that is important. So and then sometimes if there are occupational diseases, like sometimes if someone works in a cement factory, cotton factory, like the things what they inhale, sometimes like the painters, chimney workers. So each particular occupation will have, it's a hazard for few of the cancers. So if in such cases we cannot avoid that, but at least we can have a regular checkups for the employees and then try to see what is the limiting factor wherein we can do. So there are many reasons, like, and other common thing is the infections. So there are certain cancers which are caused by infections like hepatitis B. If it is there, then that can lead on to your chronic liver disease, and also for the liver cancers, hepatitis B and hepatitis C. So hepatitis B you have vaccine, but hepatitis C you don't have a vaccine, but you have treatment. You take 6 months of treatment, you're cured of hepatitis C. So your risk for liver cancer comes down. Likewise, as I was saying, for the stomach cancers, your H. pylori infection. So if you get it treated, you take 6 to 8 weeks of proper course for H. pylori infection. If that is treated, your risk of stomach cancers come down. Likewise, these days what is more common, what we are seeing is HPV infection, that is human papilloma virus infection. So that's mainly related to your oral head and neck cancers and also to cervical cancers in female. So this is one particular cancer where you have vaccine for a cancer, that is cervical cancers. Like in India, still in rural areas, cervical cancer is the most common. Like breast cancer in metropolitan cities and all, that's the #1 cancer what you have. But still in rural areas, we see that cervical cancer is most common in females. And वो जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं आप, वो कब लिया जा सकता है? वो generally is given to children. Okay. Like so then you the prescribed time is from the age of 9 years till 14 to 15 years. So that is the time wherein Not after that. See, it's basically how it acts is mainly this HPV virus infection. It is a sexually transmitted disease. So generally you give it in their teens just before they start their college. That's the ideal time to give. You can give it before their marriage anytime. That should be fine. Before they start their first sexual activity, that is the ideal time. So but when you give for 9 to 14 years of age, you will have 2 doses to be given. And beyond that, if you are giving, you will give it for 3 doses. So first dose if you are giving now, after 6 months, you will give the second dose. That's the schedule. If you are giving at 3 doses, 0, 1 and 6. First dose, like your hepatitis B vaccination. 1 dose now, 1 month later the second dose, and after 5 months later you will be your third dose. Third dose. Okay. So we are just close to
एंड ऑफ आवर शो। तो मैं जाने से पहले दोनों को एक बार एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो कैंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत डरावनी वर्ड है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट उससे भी ज्यादा डरावनी होता है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है और इसके ऊपर जो जितना खर्चा होता है। सो हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर अ पर्सन at ILS hospital Agartala? Okay. See, it's not about, and cost is different for different cancers, and depends on which stage it is. Okay. So actually, आप एक पूछ रहे थे, आप advances in oncology करके पूछ रहे थे. We were actually diverted from that topic. So advances in oncology, when I said, जैसे मैंने बोला था कि सर्जरी है प्राइमरी, देन वी हैव कीमोथेरेपी, देन वी हैव रेडिएशन थेरेपी. अभी कीमोथेरेपी के आगे भी कुछ ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं. नाउ वी हैव टारगेटेड थेरेपी, देन वी हैव इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. इसके आगे भी आया है कि कार टी सेल थेरेपी. ये सभी है ऑप्शंस, लेकिन सभी लोगों के लिए सभी ऑप्शंस की जरूरत नहीं होगी. एज आई सेड, लाइक अगर अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ब्रेस्ट कैंसर समझ लीजिए, अगर आप स्टेज 1 में छोटा सा ही ट्यूमर है तब आ जाएंगे, अगर तो सर्जरी कर लेंगे तो बस है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो सर्जरी का खर्चा कितना होगा? सिर्फ उतना ही होगा. अगर 1 लाख है सर्जरी का खर्चा तो सिर्फ 1 लाख में हो जाएगा. अगर आप एडवांस स्टेज में आएंगे, स्टेज 2 या स्टेज 3 में आएंगे, तो डेफिनेटली आपका तो सर्जरी का खर्चा होगा ही, साथ में आपको कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा. कीमोथेरेपी लेंगे तो कीमो तो जनरली 6 to 8 साइकिल्स का होगा. अभी जैसे एडवांसेस बोला है, तो अभी तो आजकल हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है कि कौन से जेनेटिक म्यूटेशन, कौन से जीन की वजह से या क्या म्यूटेशन हुआ है, क्या चेंज हुआ है बॉडी के अंदर, जिसके वजह से कैंसर डेवलप हुआ है या कैंसर प्रोग्रेस होगा, ये भी हमें पता लग सकता है. ऐसे डायग्नोस्टिक मोडालिटीज भी है, जैसे पीसीआर, फिश, अभी ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज है जिससे हम पता कर सकते हैं किस जीन की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है. ये जो तो ऐसा है, रिटर्न भी कर सकता है. सॉरी, रिटर्न भी कर हाँ, सकता है. कैंसर तो ट्रीटमेंट के बाद भी आ सकता है. Okay. तो इसलिए अगर हम कीमोथेरेपी के साथ हम टारगेटेड थेरेपी भी देते हैं, अगर इनको ऐसा कुछ जेनेटिक चेंजेस पाया गया है शरीर में, तो डेफिनेटली उसको टारगेट करते हुए भी हम ट्रीटमेंट देंगे. वो जो है वो कॉस्टली है. Okay. लेकिन हर किसी को नहीं लगेगा. अगर वो म्यूटेशन है तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. So depends on the stages. Stages also, and this genetic drive, what drives the tumor. Okay. अगर ऐसा कुछ म्यूटेशंस पॉजिटिव है तो आपको ऑब्वियसली उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बदलना पड़ेगा. ओके, ओके. और ये जो कैंसर है, हमेशा हम लोग सोचते हैं, ये जो हमको मैंने अभी पूछा कि ये रिटर्न कर सकता है कि नहीं, अगर रिटर्न होता है तो मतलब चांसेस कितना रहता है उसका? सो ये चांसेस भी, जैसे अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो जनरली रिटर्न करने का चांसेस बहुत कम होता है, वेरी लेस. ओके, क्योंकि वो जब बहुत ही छोटा है, वो दूसरे ऑर्गन तक भी, मतलब आसपास भी स्प्रेड नहीं हुआ है, तभी हमने उसको निकाल दिया है, तो वो चांसेस आर वेरी लेस. अगर वो थोड़ा लोकली एडवांस्ड है, स्टेज 2 तक ठीक है, लेकिन अगर स्टेज 3 तक चला गया है तो हमें शायद, जैसे स्कैन करते हैं तो स्कैन में तो सिर्फ वो ऑर्गन के आसपास ही दिखेगा जो हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी माइक्रोमेटास्टेसिस हो जाता है. मतलब जो 1 या 2 सेल भी होगा जो आंखों को नहीं दिखेगा, वो कहीं चला गया होगा, वो रह लेगा थोड़ी देर, थोड़ी दिन या थोड़ी महीने या थोड़े साल, बाद में फिर से आ सकता है. ये प्रॉपर्टी हो सकता है. तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा, द चांसेस दैट द डिजीज माइट रिकर बैक इज मोर. जितना अर्ली स्टेज में आप ट्रीटमेंट करेंगे, आपका यही एडवांटेज है कि जितना अर्ली आप पहचान पाएंगे, आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी भी उतना कम होगा, और आपका चांसेस ऑफ डिजीज कमिंग बैक ऑल्सो विल बी लेस. ओके, ओके, अंडरस्टूड. থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর জয়নিং আস. তো আজ আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ক্যান্সার এমন একটা রোগ যা নিয়ে মানুষের মধ্যে কিন্তু বহু প্রশ্ন থাকে, সব থেকে বেশি থাকে সেটা হচ্ছে ভয়, এবং সেই ভয় থেকে যাতে আপনারা দূরে থাকতে পারেন এবং এর যাতে প্রপার ট্রিটমেন্ট করিয়ে একেবারে সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেন. হ্যাঁ, সামান্য হয়তো একটা চান্স থাকে সেটা ফিরে আসার, কিন্তু ডিপেন্ড করছে আপনার লাইফস্টাইল কেমন, আপনি কোন স্টেজে রয়েছেন এবং ট্রিটমেন্ট আপনার কেমন হচ্ছে. গোটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আপনার এখন আর কোনো চিন্তা করার কিছু নেই, কারণ আইএলএস হসপিটাল আগরতলা রয়েছে এবং সেখান থেকে কিন্তু আপনি বা আপনারা আপনার প্রিয়জনদের ট্রিটমেন্টটাও সেরে নিতে পারেন এবং তার জন্য খুব বেশি সময় লাগবে না, খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন. কিন্তু হ্যাঁ, সবার আগে আপনার যেটা দরকার তা হলো আইএলএস হসপিটাল আগরতলা এসে
একবার ডক্টরের কনসালটেশন নেওয়া এবং ডক্টরদের কথা মতো চলা, তার পাশাপাশি লাইফস্টাইল বা নিজেকে মেনটেন করতে হবে সমস্ত কিছু। কখনো সে স্মোকিং হোক, ড্রিঙ্কিং হোক, এসব থেকে যদি দূরে থাকা যায় তাহলে হয়তো আপনি ক্যান্সার থেকেও দূরে থাকবেন। সুতরাং সচেতন নাগরিক হন এবং নির্ভয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে ILS হসপিটাল আগরতলায় চলে আসুন। আজকের মতো শো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার।